Welcome once again. And the same thing, if you are new in this page, just like it and share it so you can get the latest informations regarding philosophy, organon of medicine, repertory, and materia medica. Today this is a very, very important topic, philosophy, homeopathic philosophy on fever. There are lots of situations sometimes when we face high temperature. Mostly we all try to give medicine, but maximum people doesn't know when to prescribe medicine, how much dose should we prescribe, when we have to repeat, and how many doses, which fever is good, which fever is bad, and if we have any more worst condition, how to handle it. So that's why management is very, very important than just prescribing the medicine. So fever necessary for good health. So this is a clear-cut indication. If you have a fever, it means your body is reactive, and the body is reactive to any unwanted antigen in our body. If there is any unwanted antigen in our body, our body react and produce fever. So the body can manage or fight against that antigen. More often the fever represent to our society something to be avoided at all cost. This is a fact. In our society, if somebody has a fever, we immediately give to anything to reduce that fever. And we know that some fever, if left too long or if they get too high, can cause serious complication, and the most important complication is dehydration. Dehydration is one of the most common side effects of fever. Ironically, the dehydration can also cause a fever. If somebody has a dehydration, he can also feel that fever. And convulsions can be results of cerebral congestion from a fever that get too high. If the fever goes too high, then the cerebral convulsions can face that person. Fever associated with streptococcal infections are known as permanent damage to kidney and heart. कि अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, then it can permanently damage to kidney or heart. It means कि if आपके पास एक पेशेंट आया है तो किडनी से प्रॉब्लम है, तो आपको उसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है, क्योंकि उसने मेडिसिन क्या क्या ली है, उसको किस तरह का फीवर हुआ था, कौन कौन सी चीजें उसने फेस की है. So I will try. I know one doctor who he's homeopath and very, very good in diagnosis, and I will try to contact him, and he will give you full information on CBC, complete blood test. I try my best. So if the person is a streptococcal infection, and we can judge through complete blood
जो CBC है, count है, then we can judge the patient suffer from what kind of infection any person has. We can judge through CBC. In terms of developing immune system and continue good health, it has been my personal and clinical experience that the ability to develop a fever and recover through the fever is necessary and important aspect of life. अगर आपको फीवर आ रहा है, it means body react कर रही है. This is a healthy condition if your bodies react to any antigen. So there are many causes. I put one paper notes. मैंने कल भी एक पेपर नोट्स आपको शो किया था. ये पेपर नोट है, ये मैंने अपनी वॉल पर डाला हुआ है. There are lots of causes of fever. Local and systemic bacterial and viral infections are most commonly associated with fever. Any kind of fever, and mostly this says, hey, there is a viral infection all around over. There is a bacterial infection all around our place. This is the season of fever. This is the season of infections when there is a change of temperature, weather. So there are lots of reasons. So the first reason is local or systemic bacterial or viral infections, which is the most commonly associated with fever. Heat stroke and head injury are also capable of producing fever. Heat stroke or head injury. Third one, overexposure to cold wind is a common etiology for fever. बच्चे बाहर खेल रहे थे, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या ठंडी हवा थी, जब घर आया फीवर हो गया. Overexposure to cold wind is a common etiology of fever. Emotional responses such as shock and trauma can also produce fever. Teething children can develop a fever with or without the apparent infection. And if your kid is in teething development or teething children, they can produce a fever because the situation produces a fever. There may be an infection, there not be an infection. And the fever is an important part of this developmental process. If your kid has a fever during dentition period, then don't try to prescribe the medicine immediately. Try another method first. And if the fever is continued, then you can prescribe accordingly. Second, whatever the cause, कोई भी कारण हो, किसी भी तरह का कारण हो, development of fever is a mechanism to protect the body. अगर फीवर हो रहा है तो ये एक बॉडी का रिस्पॉन्स है. दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द अनवांटेड एंटीजन इन आवर बॉडी. दिस इज and the fever work to kill off the invading bacteria and to localize infection or to stimulate antibody production. What fever cause is it kill the bacteria, it localize the infections, or it stimulate to produce antibodies against the production. The suppression of this healing mechanism lead to a solutions of original problem and the beginning of chronic disease. So what Hahnemann says, if you are suppressing fever by any method, it may resolve the situation. But if it is suppressed, it will produce chronic diseases. Effective treatment for fever with homeopathic support the healing process by helping the body to what
is trying to do to resolve the situation. So in this situation, when you are using homeopathic remedy according to the situation, then we can resolve the situation without producing the chronic disease. But if you are prescribing 4 or 5 remedy at the same time, it means you are complexing. Just reducing fever is not the cure. Third, through the support of remedy, the degree of suffering from the condition is less. For example, a teething children develop a fever. If left alone, this condition could lead to an earache, cough, and other conditions. With the use of homeopathic remedies selected in the according to the fever, teeth, and other symptoms, not only will the process of teething be supported, but fever will clear and secondary conditions are less likely to develop. Teething children, फीवर है, अगर उसको छोड़ेंगे तो कानों में कफ, ये सिचुएशन पैदा होगी. अगर ये सिचुएशन पैदा होती है तो इस दौरान हमें होम्योपैथिक रेमेडी देनी ही पड़ेगी. तो दैट सिचुएशन कैन रिड्यूस फीवर, प्लस इट विल सपोर्ट द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ पीपल. I know one case in which the girl is two year old, and when I see that girl, I prescribe that remedy. At that time, she doesn't have any teeth in the mouth. Even after 1 year, no teeth. And after I prescribe that medicine, she has a fever, and I told them to don't give few things during this prescription, but they didn't stop themselves, and after that the development of teeth is stopped. For example, with chickenpox, a fever is necessary part of process of developing immunity. चिकन पॉक्स में फीवर का आना बहुत जरूरी है ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज बन सके. द फीवर हैज ए रीच सर्टेन टेम्परेचर टू डेवलप ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेटेड एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द वायरस. एक लेवल तक फीवर का जाना जरूरी है. And with the support of homeopathic remedy, the disease will go through all the stages of the disease: incubation period, prodromes, fever, eruptions, yet it will be in much shorter time and 1 or 2 days rather than 1 or 2 weeks. Okay, with the help of homeopathy, we can shorten the period of that chicken pox. It means incubation period, prodrome, fever, and eruptions. And if the fever is there but no eruption, this is very, very worst condition for the patient, and it will move towards chronic disease. It will produce lots of troubles, convulsions, asthma, lots of things. The symptom will very less severe, and likelihood the sequels of the disease will be reduced, and the secondary complications of the disease. Full immunity is generated at much less response of the body with the support of homeopathic remedy. So it is important however to monitor fever. Very, very important. अभी मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर क्यूरेटिव जो फीवर है वो तो ठीक है, अगर एडवांस फीवर है तो क्या हमें एलोपैथिक के पास छोड़ देना चाहिए? ये एक क्वेश्चन आया था. उसका आंसर ये है, वी हैव टू मॉनिटर द फीवर. द कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथी of helping the development of curative fever must not be confused with the letting a fever run wild. इसका मतलब ये नहीं है कि हम फीवर को छोड़ दें, भी वो अपने आप ठीक हो जाएगा. No. Left on their own, fever can be potentially life-threatening
फीवर इज लाइफ थ्रेटनिंग, वो आपकी लाइफ खत्म कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना है? Adjective measure such as plenty of fluid, because we know that the first and the most important complication of the fever is dehydration. So we have to give plenty of fluid to the patient's intake to reduce the risk of dehydration, and placing cold towel on feet and hand can draw the heat out of head, and cold bathing can also help. But one thing have to watch, the cold water is not shock the system. इतना ठंडा नहीं होना चाहिए कि वो सिस्टम को शॉक पैदा करे, because some pathological condition will develop with into seizure from shock of cold water. ठंडा पानी सीजर पैदा कर सकता है बच्चों में या किसी में भी, if that cold water bathing shock the system. The difference between curative fever and advancement of pathology is demonstrated in journal. A fever that is an aspect of pathology will be accompanied by restlessness, pain, agitation, listlessness, stupor, with concomitant of rapid respiration, feeble pulse, congestion, chills, and nasal drainage, and the totality of these symptoms will indicate the appropriate remedy. This is the advancement. If there is a fever with, so we have to understand that this is a curative fever or this is advancement of the internal pathology. If the fever with restlessness, पेन, एजिटेशन, लिस्टलेसनेस, स्टूपर, सोए रह रहा है, डॉक्टर साहब लेटा ही रहता है इसके अंदर, इतने या बहुत रेस्टलेस हो गया या बहुत निढाल हो गया, ये सिम्टम उस फीवर के साथ हैं, दिस इज नॉट क्यूरेटिव. वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी टू द पेशेंट, एंड द टोटलिटी ऑफ दैट सिम्टम गिव यू वन रेमेडी. A fever that is curative fever, after a remedy will come without the concomitant symptom. उसके साथ concomitant symptom नहीं होगे, जैसे rapid pulse है, rapid respiration है, congestion है, chill है, nasal discharge है, but with the level of calmness, if that fever is curative. और आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर साहब फीवर तो है मगर मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं, फीवर मुझे तंग नहीं कर रहा. It means that patient is now in recovery phase. And the fever may be quite high. हो सकता है कि वो high हो, but it will followed within 4 to 10 hours with the perspiration that make the breaking of fever, after which recovery should ensure. उसके बाद recovery हो जाएगी. Careful monitor under the care of homeopathic practitioner will help determine if the fever is an appropriate fever. So we have to understand कि हमें किस तरह से फीवर को देखना है. Is it curative or is it advancement of the? If there is advancement, then we have to prescribe the remedy. But don't prescribe any homeopathic remedy during the peak of the fever. फीवर जब ऊपर चढ़ रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड या ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, डोंट प्रिस्क्राइब द होम्योपैथिक रेमेडी. इस दौरान अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो इफेक्ट वर्स्ट आएंगे. जब फीवर डाउनफॉल की तरफ आ रहा है, पसीना आ रहा है, उसको नीचे आ रहा है, फीवर रिड्यूस हो रहा है, उसने अपना एक पीक के ऊपर वापस आने लग गया है, तब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है. बिफोर आपको दूसरे मेथड इस्तेमाल करने हैं. साथ के साथ फीवर के लिए आप मेडिसिन नहीं देंगे. जैसे जैसे फीवर कम हो रहा है, जैसे जैसे अपने टॉवल लिया या कोई ठंडी चीजें उसके हाथों पर लगाई या पैरों पर लगाई ताकि फीवर रिड्यूस हो. जब वो रिड्यूस होने की तरफ आ रहा है तब आपको मेडिसिन देनी है.
उसके पहले आपको उसको प्लेंटी ऑफ वाटर देना है, उसको मैनेजमेंट देनी है। उसके बाद आती है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी आई थी एंड डॉक्टर शो in 1855 developed a germ theory, formed the basis of conventional medical treatment with regard to the most disease process. The germ theory states that bacteria and viruses are responsible agent for all infectious contagious diseases. डॉक्टर शो ने कहा कि जो जितने बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं, they are responsible for producing these contagious diseases. उसके बाद आया लुइस पॉस्चर. He postulated that bacteria are found at the site of infections. They must be the cause of infection. उसने ये कहा. उसके बाद आया डॉक्टर रॉबर्ट कॉच. Another scientist, he says, is known as Koch postulate, and he postulated that the blood from a diseased animal will make another animal sick, and the disease particle found in the first animal will be the same as those found in the second newly infected animal. Sorry. He also found that the animal were to recover from the disease, it would never get the same disease again. But from the work of these men began the development of vaccination. इन लोगों की इस डेवलपमेंट के बाद वैक्सीनेशन का आविष्कार हुआ. There is a vaccination for specific diseases to eradicate the problem of virus. But उसके बाद क्या हुआ? The same philosophy was applied to eradicate the bacteria. Same philosophy बैक्टीरिया को इरेडिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल की गई. एंटीबॉडीज बनाए गए, एंटीबायोटिक्स बनाए गए. एंड the thinking was that if you could kill the bacteria, then an infection could not occur. थिंकिंग क्या थी कि अगर आपने बैक्टीरिया किल कर दिए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. बट लुइस पॉस्चर, जिसने बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया, उसने अपने लास्ट के दिनों में कहा कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू. द जर्म्स आर नथिंग, द सोइल इज एवरीथिंग. कहते जर्म्स कुछ नहीं है, दे आर नॉट अफेक्टिंग, बट जो सोइल है, जो एक पर्सन की इंटरनल बॉडी है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए रिएक्शन. और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह लिखा गया है कि अगर किसी हेल्दी पर्सन में अगर कोई इन्फेक्शन छोड़ दिया जाए तो उसको वो इफेक्ट नहीं करता जब तक कि वो इंटरनली उस लेवल तक नहीं पहुंचता. तब तक वो इन्फेक्शन उसको कुछ नहीं करेगा. बैक्टीरिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. बॉडी रिएक्ट करती है अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया नहीं रिएक्ट करता है. एंड द जर्म theories, but it was too late. In its later posture, had realized that it was a soil or etiology of the person that dictate whether an infection could take hold rather than the process of germ. ये पर्सन की इंटरनल बॉडी है जो ये शो करेगी कि आपको ये चीजें, वो जो इन्फेक्शन है वो अंदर रहेगा या नहीं रहेगा. What Hahnemann says, हैनेमन ने भी यही कहा था कि ये जो पर्सन है, ये जब तक टोटली सिर से लेके पैरों तक इन्फेक्टेड नहीं होता तब तक उसके अंदर सिम्टम पैदा नहीं होते. क्रॉनिक डिजीज पढ़िए, उसके अंदर आपको इन चीजों के आंसर मिलेंगे कि जब तक वो इंटरनली पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर सिम्टम पैदा नहीं होते. उसके बाद
It is true that many people, children, the elderly and those with injuries died from bacteria condition before the development of antibodies. जब तक antibodies नहीं बने तो इस तरह के जो already ill person थे, कमजोर थे, उनकी death हो गई. Claude Bernard and Anthony Bechamp, ये दो डॉक्टर थे, contemporaries to Posture and Koch, believe the organism that already live in the body did not cause illness. इन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया तो these bacteria are already lived in the body, but they are not affecting. Only when the body became unbalanced and unable to maintain homeostasis did these bacteria become toxic. तब जाकर बॉडी जो है वो अल्टर करती है, तब जाकर जो बॉडी जो है वो उसमें इन्फेक्शन पैदा होता है, तब ये बैक्टीरिया जो है बॉडी के अंदर डिजीज पैदा करते हैं, अदरवाइज नहीं करते. अब होम्योपैथिक फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग. Therefore, in cases of bacterial infection, homeopathic remedy do not kill bacteria directly, but aim to stimulate the immune system ability to produce a necessary defense to eradicate the germ. For example, the development of fever or discharge. Fever develop हो गया, bacteria अपने आप kill हो जाएंगे. Discharges, nasal discharge, pus, vomiting, diarrhea, ये प्रोड्यूस हो गया तो बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी. जब बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो हेल्थ क्रिएट होगी. सो दिस इज ट्रू फॉर फूड बोर्न बैक्टीरिया and other external disease agent as well as resident bacteria. In health, the common bacteria we find in the bodies are streptococcal, staphylococcus and other remain in non-pathological state. It is when the body becomes out of balance, the bacteria will be pathogenic. They change into the pathogenic. And it is the understanding condition of one's well-being that is supported in homeopathic treatment. So we have to understand that if any person is in disease condition, it means वो already इस ऐसी सिचुएशन में है कि उसके हेल्थ और उसकी डिजीज के अंदर जो उसके अंदर बदलाव आए हैं, that changes are very, very important to prescribe on it. So during this situation, fever is a common symptom. But he says, डॉक्टर साहब, whenever, जब भी मुझे फीवर आता है, फीवर और जब ठंड लगती है, ठंड लगनी शुरू होती है, उसके दौरान ही मुझे वॉमिटिंग आती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट concomitant symptom. और अगर आपके पास एलन की नोट है तो आप एक रेमेडी खोलिए, मैं आपको बता दूं. लाइकोपोडियम में ये लिखा हुआ है कि वॉमिटिंग इन बिटवीन चिल एंड फीवर. देखिए, एवरीथिंग सीम टेस्ट सॉवर, इरिटेशन, हार्टबर्न, वाटर ब्रश, sour vomiting, खट्टी vomiting between chill and heat. Fever is common, but the symptom produced during this fever are very, very important.
Very important. So that's why we have to understand the philosophy of organ of medicine, how to treat, what we have to see in the patient, देखना क्या है, किस तरह से देखना है, ये डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन हमें बताएगी. सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं. नेक्स्ट जो सेशन हम रखेंगे, क्योंकि अगर आप इतना ही अगर आज डाइजेस्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट जो सेशन है वो हम एंटीबायोटिक्स, उनके इफेक्ट्स and the development of fear when addressing unsolved illness in with homeopathy, ये डिस्कस करेंगे. ये 2 टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट सेशन के लिए. और उसके बाद कुछ दवाइयां मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ उनके की पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं. अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो प्लीज डिस्कस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना सवालों के उनके आंसर नहीं दिए जा सकते और ना ही हम कुछ सीख पाएंगे. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. और नेक्स्ट जो मेरा सेशन रहेगा वैक्सीनेशन के ऊपर, ज्वाइन कीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट lots of information regarding vaccination and homeopathy, and I will try my best to give full information on this topic, and after that we can try this in our clinic too. So अगर आपको लगे कि ये टॉपिक हमें आना चाहिए या हमें जरूरत है इस टॉपिक की हमारे क्लिनिक पर, तब से ज्वाइन कीजिएगा. आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट. थैंक यू सो मच.